must look and we must try to learn yoga and imbibe yogic techniques, not only in terms of asana and pranayam, but kind of food habits also, ahar also, dincharya also, ritucharya also, achar, vichar, ahar, vihar, and vyavahar. These are panch stambha which have been told in the Ayurveda also, and also in Ayurveda they are the trayo upastambha of the swasthya, uh, ahar, nidra, and brahmacharya. So yoga a diversive, all encompassive. And on this juncture, I also would like to attract the attention of our all who are here. If we go up to look into the syllabi of the yoga and different yogic or physical education, or wherever the yoga is being taught, more than I think around now the number has reached up to the 200 institutions, including universities also, including the exclusive university on yoga also. The yoga subject or syllabi, either in terms of certificate or diploma, or a level of graduate or postgraduate up to the doctoral level, it includes psychology, it includes the nutrition, it includes the physical education, it includes the philosophy, it includes the culture, it includes the Vedic sciences, and so on and so forth. All inclusive areas are covered in the yoga. So uh, in the same way, the very name of the yoga is significant. The yoga, union, samatvam, yoga karmasu kaushalam. What kind of skill is required for not only living but also becoming consciously evolved more, an evolution of the consciousness and upgradation of the understanding, not only our own existence but the worldly behavior, but our whole psychology as well as our whole physiology. They are there in the yoga. And let me also tell you one more thing on this juncture, that the whole understanding, the whole knowledge that flows from consciousness, and this whole consciousness, yoga, chitta, vritti, nirodha. So the very target, the very aim, the very objective or goal, or the whole purpose of the Patanjali Yoga Sutra is set up by the chitta, vritti, nirodha, and it is very easy in terms of argument to understand. If you are going to remove, or you are going to stop, or there is a cessation of chitta vritti, then you have to master of the not only of your consciousness, that is the all inclusive understanding of the consciousness, it's happening, and its nature, as well as the vrittis, means all kinds, all levels of knowledge. Maybe these are the panch vritti in praman, viparya, vikalp, nidra, and smriti, which have been defined in the yoga sutra immediately after this. But as a whole, यदि हम बात करें, तो सारे के सारे चेतना में घटने वाले जीवन, जगत, व्यवहार, अनुभव, ज्ञान, व्यापार और समृद्धि, यदि हम दीपावली के इस परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो सब कुछ चेतना में, जीवन में जो घटित होता है, उन सबको देखने ऑनलाइन पढ़ा होता है और जानने की क्षमता के बाद ही उन वृत्तियों को समझने, उनके एकाग्रता की बात हम कर सकते हैं, और वो क्षमता उत्पन्न हो सकती है, चाहे वो अष्टांग योग के रूप में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की बात हो, चाहे वो क्रिया योग के रूप में तपस्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान की बात हो, या केवल उत्तम साधकों के लिए जहां पर बात आई है केवल अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा योग की बात आई हो, तो योग अपने आप में अत्यंत क्षमतावान, पोटेंशियल और ऊर्जा को धारण करने वाला विषय है। और ऐसी ही क्षमता के साथ योग और योगी होना संभव है। और योगा के रूप में जिसे हम समझते हैं, जानते हैं, या जो रिबाउंड बैक टू इंडियन फ्रॉम द अब्रॉड और फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज, दैट इज pertain or limited to the asana or pranayama, basically the physical practices which are there because of the all metro and corporate lifestyles and all kinds of busyness, which is making a person devoid from the physical consciousness or eye consciousness, or a kind of healthy consciousness, or kind of unhealing kind of lifestyle.
So these are the lifestyle diseases or disorders which are found to be beneficial in terms of asan asyate sukham sthir sukham asana. This is the definition, means kind of a posture or position of physical status or stature where a person is feeling sthir sukh. So all varieties of asanas which have been dealt in Hatyog Pradipaka in terms of 18 or 32 in terms of Giranda Samhita, and 84 and 84 lakhs of varieties of asanas. And in pranayam, which there the vital energy, the prana or healing, that is again imbibing or getting energetic in terms of our all energy channels, sukshma urja. This is what the pranayam, and doing this from the foreign, it has become the yoga. But we all together in terms of cultural, our roots, our originality, that is what is the yoga, and it encompasses varied and varieties of our areas in terms of knowledge, or as a whole inclusive things of the life. So this is introductory part of the yoga, and what I have in the very beginning told ki I shall try to in this 20 minutes bring upon the yoga, and I have developed a concise encyclopedia of yoga which is available online since 2009, and Patanjali Yoga Sutra and Hatha Yoga Pradipika and Ghiranda Samhita. It's all meanings along with entire chanting in Sanskrit original is also available there with all other various meanings. And just wanted to show, because this our program and the very organization is named on the Ritambhara. So what exactly it is, I suppose, and I know that in the very introductory part of our very knowledgeable and energetic Dr. Carr has introduced about it. And let me also give a 1 or 2 minutes on this, as the Patanjali Yoga Sutra starts with Yogas Chitta Vritti Nirodha, and after the cessation of these Chitta Vritti and finding, according to the Vyasa, this Panch Bhumi, Chipta Vichipta Mood Ekagra and Nirudra Tak, where the unilarity of the consciousness, the monotonous consciousness or harmonization of entire existence, where the consciousness and its activity is like a reflection on the स्फटिक. जैसे स्फटिक में सारी चीजें प्योरिटी और क्लियरिटी के साथ रिफ्लेक्ट होती है और पर्सन समझता है कि ये उसकी छाया है और प्योरिटी ऑफ स्फटिक में कुछ भी नहीं है, ऐसा ही विशुद्ध चेतना का स्वरूप। और इस स्फटिक चेतना के स्वरूप में जो कंटिन्यूटी है, जो हार्मोनियस है, उसको ऋतंभरा प्रज्ञा से महर्षि पतंजलि ने साधना पाद प्रथम सूत्र में ही ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा तात्पर्य है कि योग के एक ऑब्जेक्ट को लेते हुए उसकी मोनोलिनियरिटी के साथ चेतना में उसकी एकाग्रता का बना रहना, यहां तक आने पर इसको ऋतंभरा या ऋत, वेदों में ऋत शब्द आया हुआ है, जिससे अभिप्राय है कि जो जीवन जगत का तारतम्य और एक रूपता है, इसका बना रहना, इसका फॉलो अप करना, इसका मेंटेनेंस होना, यह ऋत की बात वैदिक साहित्य में बहुत प्राचीनता में, भारतीय संस्कृति में हजारों वर्ष पूर्व, सहस्रों वर्ष पूर्व इस बात को कहा गया है। और हम अपने जीवन में, अपने जगत में, अपने व्यवहार में इसको लाने का प्रयास करते हैं, तब ही सत्य की प्रतिष्ठा और एक रूपता यम नियमों के रूप में हो पाती है। बहरहाल 48वें सूत्र के बाद अंतिम क्रम में 2 सूत्र और कहे गए हैं कि इस चेतना में जहां पर ऋतंभरा प्रज्ञा होती है, वह दूसरी अन्य वृत्तियों के निरोध का कारण होती है, और इस प्रकार सभी के निरोध होने पर निर्बीज समाधि की स्थिति उत्पन्न होती है, और यहीं पर समाधि पाद का प्रथम पाद जो योग सूत्र का वो संपन्न होता है। बहरहाल ये तो ऋतंभरा की बात हुई। एंड वेरी फास्ट आई विश टू कम अपॉन टू आवर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एज आई ऑल्सो बीइंग इन द Indian Council of Philosophical Research, which is a Ministry of Education, Government of India, and I have been
continually speaking on this national education policy and its outcomes. So, within I think 5 to 6 minutes, I wish to give a presentation on it very hurriedly. What it is telling about the yoga on our national education policy, Indian culture. So, I am just sharing the screen uh, to show this our national education policy, as I think it is visible. Yes, sir. Your screen is visible now. Yes, yes, yes. So, now, this is the National Education Policy, Yoga, Harmony of Body and Mind. This title I have given. And let's see in a very hurriedly manner what I belong now currently since 4th of this month from the Nalanda, ancient university. And so this is the old ruins of Nalanda, a rich library which was there, and unfortunately it has been uh, not with us, but legacy. We are here and discussing this national education policy very hurriedly. Four parts are there: school, higher education, other key areas, and making how it to happen. And this part one is school education. And let us see, this is the knowledge of India. It is talking about that Indian knowledge systems, including tribal knowledge, indigenous and traditional way of learning, covered and including in mathematics, astronomy, philosophy, and yoga. So the word yoga is occurring, and prior to that, in the very preface or prelims of our national education policy, the word yoga is coming, and our Indian tradition and philosophy have been invoked in our national education policy. So the yoga, architecture, medicine, agriculture, engineering, linguistic, literature, sports, game, and as governing polity and conservation. So this Indian knowledge system has been upheld and upheld in our 4.27 clause. And then again in the teachers section of our 4.44 clause of our national education policy, it has been here, it is occurring like teachers will aim to encourage students with singular interest and or talents in the classroom, and like we are having the club, sports circles. You can see in the last line, health and well-being clubs like yoga clubs. Why not to have our as per our modern tradition and our standards of doing practices, we should have the yoga clubs. And onwards in higher education system of our higher education section of national education policy, dealing with clauses 9 to 19, this internationalization, how we can attract the people, because a lot of people and money is going to foreign countries for educations. And what we do have, yoga, that we should have from other countries, we should have in training and imparting education, our system of health not only but knowledge system also. So here it is internationalization to attract the students towards the Indian education system. Yoga is there, and it is told that programs in subjects such as Indology, Indian languages, Ayush system of medicine, yoga and music, history, culture. So this is what is coming here. And in other key areas of focus, this is the professional education, that the people exercise pluralistic. This is a very important clause for all yoga people who are, I think, here. This is clause is very important to just to focus upon that we have the modern medicine education medicine system. So vice versa, it is telling about given that people exercise pluralistic choices in healthcare, our healthcare education system must integrative, meaning thereby that all students of allopathic medical education must have a basic understanding of Ayurveda, Yoga, and naturopathy, Unani, Siddha, and homeopathy, that is Ayush, and vice versa. There shall also be a much greater emphasis in preventive healthcare and community medicine in forms of healthcare education. In our Indian tradition, as I have told in the very beginning, that we have a composite, all inclusive way of life. That either we say Hinduism or whatever we do say, or we try to get attracted to the yoga or to the Ayurveda, but
in our all-inclusive approach to understand our whole life and our atmosphere, our nature, and our activities, either in terms of person or non-person, or our nature and environment. So these dealings as inclusive understanding comes in terms of yoga, in terms of Indian knowledge system. So that is there, and these are there to make a person healthy and a composite and a kind of a satisfactory life, or to understand the originality of life in terms of consciousness or prakriti and purush, which is in the philosophy of yoga, that the person is separate from the 24 elements or 24 modifications of prakriti, and the purush is the conscious element. So thereby the evolution of the consciousness occurs, and thereby the yoga occurs and happens in the life of a person. So this preventive measures are there, and in our modern allopathic system, that is based upon primarily, if I am to allow to say, there are the causes which are troubling the health, and diagnosis in terms of medications or antiviral medicines, or so on and so forth. But in Ayurveda, the basic elements of life and living are enforced with kind of substance in terms of sattvic, rajasic, and tamasic gunas, or in terms of vata, pitta, and kapas. These are the doshas of the bodies. So a wider understanding of our own system in terms of wherever we are feeling, हम सुख नहीं महसूस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ भारीपन है, कुछ बोझिलपन है, हीलिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, यहीं से स्वास्थ्य या स्वयं में अवस्थित रहने की च्युति होती है। और इस च्युति को इमीडिएट अंडरस्टैंड करना, अपनी चेतना में पकड़ना और जानना स्वास्थ्य रक्षण का प्रथम प्रभावी कदम है, जिसको सभी योग के जिज्ञासु या सभी को जानना चाहिए। और इससे न केवल स्वास्थ्य रक्षण हो सकता है, वरन उस स्थिति तक हम नहीं पहुंचेंगे जहां पर डिसऑर्डर और डिसीज की स्थिति उत्पन्न होती है। यह आयुर्वेद और योग का सिद्धांत है, और इसके लिए ही इन त्रिदोषों की बात की गई है, या सप्त धातुओं की बात की गई है, और इन्हीं के लिए या सात्विक, राजसिक और तामसिक जीवन शैली, आहार, सभी की बात की गई है। एक वाइडर अंडरस्टैंडिंग है जिसको हमें समझना चाहिए। इस दृष्टि से प्रोफेशनल एजुकेशन में आयु सिस्टम की बात की गई है। लेट मी हरी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, आर्ट एंड कल्चर इन clause 22.1. It is occurring yoga and meditation, and inspired by the Indian philosophy, unique festival culture. In 22.15 clause, again the word yoga is coming, and this is whatever as a whole is word yoga. And I am ending my presentation here, and so what is important, let me tell you before I end up. This our national education policy is a policy document. A single occurrence of any word or its meaning, or whatever way it is coming, it gives the opportunity to not only all academicians, but in general those who are all concerned with policy and policy matter, be it be a kind of say the government's councils, means statutory bodies, or say UGC, or say the ministries, or say the higher education department, or mantralaya, or whatever. They are supposed to do their respective duties. I mean to say, teachers to frame the syllabi, I mean to say the higher education department to create the commissions or the committees to go further or furtherance in views of this national education policy, or ministries or our national policy maker to devise further how to set up the organization or institutions to promote further what is the national education policy. So all a single occurrence is very important, and whole textbook or our courses and our degrees all promoted towards this. So on this juncture, I have tried to bring upon our unison towards the national education policy of India 2020.
And this yoga again, I wish to sum up, as I am to finish by 12:45, and I do keep timing in my talks. So this entire program, which have been brought forward and promoted, and up to this juncture by the Ritambhara as a National Conference 2020, and earlier to me, all the speaker, I pay my humble tribute and honor to Professor R.C. Pradhanji and and Professor Rajesh Raj, and my very humble and beloved friend Dr. Saroj Kant Karji, and all those who have been earlier to me and coming to after me, Dr. Malcolm, and of course Dr. Prashant Panigrahi, and the organizations organizing of this program. Again, I wish to invite in 1 minute to attention and invitation to all people who are connected with this live Facebook also, that yoga is very potential, provided a deeper well of joy, health, healing, happiness, harmony, and all round of development. Potential is there. How deeper we are willing to go down on it and get on it. The benefits of life, energy, and synergy all are there. So, with this humble note, I thank all the organizer and Dr. Kar particularly, and Dr. Yogi Rajji, and all of those who are here. My humble namaskar, all of them, and thanking you for listening me. Thank you, namaskar, and Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुशिम। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने योग के बारे में यहाँ पर हमारे सामने रखा है। जो सूत्र आपने बताया, योग कर्मेशु कौशलम, यानी कि कॉन्शियसली हम लोगों को इवॉल्व होना चाहिए योग के सहारे। इसी के साथ साथ जो पतंजलि योग सूत्र के सूत्र हैं, उनका रेफरेंस लेते हुए हमने वृत्तियों के बारे में आपसे समझा। और ये भी आपने हमें बताया कि सिर्फ आसन और प्राणायाम ही नहीं है जो कि योग का पार्ट है, इसमें साधना भी है। हालाँकि ये सब हमारी रूट्स है सनातन कल्चर की। और आपने ये भी हमें बताया कि एनसाइक्लोपीडिया आपने एक तैयार करी हुई है, जिसके अंदर आपने पतंजलि योग सूत्र, हिरण्य संहिता और हठ योगा के बारे में काफ़ी विस्तार से मेंशन किया है। लेकिन ये कहे बिना नहीं इस चीज़ का मैं धन्यवाद नहीं ख़त्म कर सकता, जहाँ पे आपने हमें बताया कि अब जो 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जहाँ पर योग को इतना ज़्यादा महत्वता दी जा रही है, चाहे वो स्मॉल एज स्टूडेंट्स हो, मिडिल एज स्टूडेंट्स हो, हाई स्कूल स्टूडेंट्स हो या फिर टीचर्स के लिए हो, तो यहाँ पे एक योग को लेके बहुत ही बेहतर कंटेंट बनाने की ज़रूरत के बारे में आपने बताया। और कहीं न कहीं मैं ये हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि रितान्वेशी भी हमारा ऐसा ही कंटेंट पे वर्क कर रहा है। काफ़ी तालमेल हमारा, जैसा कि सरकार कोशिश कर रही है एजुकेशन पॉलिसी के साथ, ऐसा ही कुछ तालमेल तारतम्य के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसी के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। और अब मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारी अगले स्पीकर को, डॉक्टर माल्कम आर प्रिंटर। So I'll just give the introduction in English now. So I would like to invite Dr. Malcolm Printer to the conference. He is a real practitioner of the teachings of the Buddha and has experimental knowledge of the meditation. His PhD was in the effectiveness of Vipassana meditation for all ages. He was pursuing his studies in Massachusetts that would have led to a PhD in AI. After learning meditation with a Buddhist monk over there, he changed his life's course. Hence, he discontinued these studies to return to India and to end human hunger. Thereafter, he learned Vipassana meditation after he encountered a crippling heartbreak. He now teaches meditation to children and Vipassana meditation to adults in one-day courses. He believes that there is no greater joy than to understand, practice, and disseminate the Buddha's teachings, which are a panacea for all sufferings. I think ये introduction दिया जा चुका है उनके बारे में. फिर भी this August conference welcomes you, sir, as a symposiast and requests you to share with us your experiential knowledge. So thank you, Dr. Sachin. Let's start with Dr. Malcolm now. थैंक यू। नमस्ते। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? जी हाँ, सुनाई दे रही है सर।
आप सबको मैं शुक्रगुजार हूँ, खास करके डॉक्टर सरोजकार को, जिसने मुझे ये शुभ अवसर पे यहाँ आमंत्रण किया है। मैं कुछ थियोरी बात नहीं करने वाला हूँ, मैं सिर्फ विद्या सिखाने वाला हूँ। तो आपको एक विनंती है कि आप आपका चश्मा उतारिए, आपकी आँख बंद कीजिए और जैसे बोला जा रहा है वैसे आप कीजिए, तो आप देखिए खुद कि आपको फायदा हो रहा है या नहीं। आपका कमर, पीठ, गर्दन सीधी रखनी है आपको। जब भी झुक जाए तो दोबारा आपको कमर, पीठ और गर्दन को सीधी करनी है और आपको आपका श्वास पे ध्यान देना है। ये जो विद्या हम सीखने जा रहे हैं, इसका नाम है आनापानसति। ये वही विद्या है जो भगवान बुद्ध जब 6 साल की उम्र के थे, तब जामुन के झाड़ के नीचे उन्होंने ये विद्या प्राप्त की और आगे जाके समाधि के 2-3 ध्यान एक छोटे नन्हे बच्चे ने प्राप्त किया है। तो ये विद्या का महत्व बहुत ज़्यादा है। इस थोड़े से समय में हम ये विद्या का एक झलक तो निश्चित रूप से देख सकेंगे। तो सिर्फ आपका श्वास पे ही ध्यान दीजिए। श्वास अंदर आता हो तो जानो से आ रहा है, बाहर जा रहा है तो केवल जानो कि जा रहा है। लंबा सांस है तो सिर्फ जानो कि लंबा श्वास। ओछा श्वास है या छोटा श्वास है तो केवल जानो कि ये छोटा श्वास है। हमें केवल जानना है और कुछ करना नहीं है। जब भी हमारा मन भटके, यहाँ वहाँ भटके, तो कोई चिंता की बात नहीं है। केवल देखिए कि आपका कमर, पीठ और गर्दन सीधा है या नहीं। सीधा नहीं है तो धीरज से सीधा कीजिए। बस इतना ही करना है। श्वास के साथ और कोई आकृति या मंत्र या कोई भी आकार जुड़ना नहीं है। सिर्फ केवल श्वास और शुद्ध श्वास पे ही काम करना है। ध्यान करते समय आपकी आँख हमेशा बंद रहेगी। जो चश्मा लगाते हैं वो चश्मा उतारेंगे। अपने मन को हल्का करना है। जो विचार के बोझ है अपने मन में, उसको एक साइड में रखना है। ध्यान करते समय निर्विचार होना है, उसका प्रयास करें। कोमलता से, धीरज से। गलती हुई तो थोड़ी सी भी अपने आप को ब्लेम नहीं करना है या गुस्सा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। धीरज से, श्रद्धा से काम करें।